So yeah, myself, Advocate Rishabh Kulshrestha, and I'll be taking over this particular session for all of you guys today. And since you all know the topic is insurance laws and insurance claims itself, also to tell you guys कि आज हम PPTs तो आपको हम प्रोवाइड करेंगे ही आफ्टर द सेशन इटसेल्फ, बट हम आज थोड़ा सा और कॉम्प्रिहेंसिव वे में सब्जेक्ट मैटर को भी समझेंगे, राइट? सो डोंट जस्ट थिंक कि हम पीपीटी को डायरेक्टली रेफर कर करके पढ़ेंगे, वी विल फिगर इट आउट एंड हम समझ समझ के लिख लिख के भी काफी चीजें समझेंगे। ठीक है, तो द क्वेश्चन हियर इज, like each and everybody of us might have heard about the insurance itself, of course हमने इंश्योरेंस किसी ना किसी चीज की ली भी होगी। तो अब हमें पहले समझना है कि व्हाट इज इंश्योरेंस फर्स्ट ऑफ ऑल। किसी भी चीज की अगर हमें लीगैलिटी चेक करनी है तो ऑफ कोर्स वी शुड हैव अ गुड आइडिया ऑफ द सब्जेक्ट मैटर इटसेल्फ। पहले सब्जेक्ट मैटर के बारे में जानना जरूरी है, उसके बाद हम उसकी लीगल एस्पेक्ट्स को जानेंगे, राइट? सो बेसिकली we'll start with this, of course, and this particular ppt you will guys will get in the group itself, so don't worry, ppt आपको मिल जाएगी। So yeah, I'm sure the screen is visible to you, the black screen. So yeah, so the question is about insurance। इंश्योरेंस क्या है? तो बेसिकली इंश्योरेंस इज अ रिस्क ट्रांसफर मैकेनिज्म। Basically, when the risk transfer is being done from one person to another, so it is called as insurance। अब यहाँ पे दो पार्टीज इन्वॉल्व होती है, जस्ट लाइक other contracts as well, the private contracts that we might have heard about. But this particular insurance contract is not like the other contracts. हमें ये जानना बहुत जरूरी है, it's very important to understand that this particular contract for the policy document is not the ones that are other ones which are done in the other contracts as well. So basically the idea is, यहाँ पे दो parties involved होती है, insurer and insured। The insurer is the one who is known as the insurance company, and the insured is the one who is known as the policy holder। जो कंपनी आपको इंश्योरेंस देती है उसको हम कहते हैं इंश्योरर, एंड जो इंश्योरेंस को क्लेम करता है उन्हें हम कहते हैं पॉलिसी होल्डर। सो वील अंडरस्टैंड दिस, द वन इज इंश्योरर एंड द अदर वन इज इंश्योर्ड, राइट? इंश्योरर को हम बोलते हैं इंश्योरेंस कंपनी, राइट? एंड इंश्योर्ड इज द पॉलिसी होल्डर। सो आई होप दिस इज क्लियर। अब आगे की चीज हम लोग समझने वाले हैं एक केस स्टडी समझने के बाद। सो वील go through a case study. Just assume that there are three friends, X, Y, and Z. All of three plans to go to a trip towards Shimla. X, Y, and Z plans to go to a trip towards Shimla. अब क्या होता है? Person X is having a life insurance. Person Y is having a health insurance. And person Z is having a theft insurance. ठीक है? I'll write here X, Y, and Z. इसके पास है लाइफ इंश्योरेंस, इसके पास है हेल्थ इंश्योरेंस, इसके पास है थेफ्ट इंश्योरेंस। अब तीनों दोस्त शिमला जाते हैं, ऑल ऑफ थ्री देम आर ट्रैवलिंग टू द शिमला, एंड सडनली वहां पे दे मेट विद एन एक्सीडेंट, एंड अनफॉर्चुनेटली एक्स लॉस्ट हिज लाइफ। सो सिंस वी नो दैट एक्स वाज ऑलरेडी हैविंग
the life insurance. So one of the nominees of X got the claim. ठीक है. And since you guys know accident हुआ, तो on the similar lines, fortunately Y survived, but काफी ज्यादा उसको इंजरी आई. So the other people and Z took him to the hospital as well along X. So Y survived, but Y के साथ बहुत ज्यादा बॉडीली इंजरी आई एंड अच्छा खासा मेडिकल ट्रीटमेंट चला, मेडिकल बिल्स बने. तो उस बेसिस पे यहाँ पे इसकी हेल्थ इंश्योरेंस काम आई. एंड इफ आई टॉक अबाउट जेड, सो जेड वॉज कैरिंग अ बैकपैक. उस बैकपैक में काफी इंपॉर्टेंट एंड अलीट सामान था, एलीट आइटम्स थी. सो फॉर दैट ही टुक द कवर फॉर द थेफ्ट इंश्योरेंस कि इफ आई एम टेकिंग माई बैकपैक along the trip and if something like theft happens with me, so I am having a cover of it. तो क्या होता है एक्सीडेंट के बाद, जेड वॉज नॉट इन द कॉन्शियसनेस एंड सडनली ही सॉ कि एक दोस्त की जान जा चुकी है, एक दोस्त को ज्यादा चोट लग चुकी है, तो ही वॉज आउट ऑफ कॉन्शियसनेस. सो उसने अपना सामान छोड़ के ही टुक देम एंड रश देम टू द हॉस्पिटल. सो आपको पता है यहाँ क्या होता है. तो मीनवाइल व्हेन ही केम बैक ही सॉ दैट हिज बैकपैक इज नॉट देयर. सो ही रजिस्टर्ड द एफआईआर ऑफ लॉस्ट एंड फाउंड. तो कुछ दिन बाद पता लगता है कि दैट बैकपैक वॉज बीन स्टोलन. तो यहां पर जेड के लिए क्या काम आया, उसकी थेफ्ट इंश्योरेंस. तो इस पर्टिकुलर केस स्टडी से हमने क्या समझा कि द डिफरेंस बिटवीन द इंश्योरेंसेस डिफर्स विद द इम्पैक्ट दे आर क्रिएटिंग. अब यहां पे हमने जैसे पहले फिनोमिना समझा था कि देर आर टू पार्टीज, द इंश्योर्ड एंड द इंश्योरर. अब यहां पे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस की भी गेम आती है. So what are the type of insurance? There are two types of insurance. The one is life insurance and the other one is general insurance. लाइफ इंश्योरेंस जो एक्स की थी वो अपने आप में ही एक सेपरेट आइडेंटिटी इंश्योरेंस की. एंड जनरल इंश्योरेंसेस आर द वंस दैट इन्वॉल्व्स हेल्थ इंश्योरेंस, थेफ्ट इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मोटर व्हीकल इंश्योरेंस. आप सबने ये सुना होगा, राइट? तो ये पर्टिकुलर केस स्टडी हमें सिखाती है कि हाउ डिफरेंट life insurances or the other insurances works on the different damages that occur in our lives, right? अब हम आगे बढ़ते हैं. Since we understood the types of insurance, so yeah, see, I know that all of you guys must be knowing that insurance companies काफी अच्छी ज्यादा अमाउंट में हमारी कंट्री में है. इवन फॉरेन कंपनीज भी हमारे यहाँ पे आती हैं. एंड इवन लगभग आई प्रेफर दैट somewhere all of the people must be going through something and they are acquiring to cover some sort of damages out of the insurance. So फिर भी out of all these, why we listen or we hear the terms of insurance disputes? क्यों होती है ऐसी? Since you all guys are from the legal industry itself, some of you would be the law students or the legal professionals. तो ऐसा क्यों होता है? See, 500 million से ज्यादा इंश्योरेंस पॉलिसीज बिकती हैं इंडिया में, राइट? सो उसके साथ साथ, सिंस यू गाइज नो दैट दिस पर्टिकुलर रिस्क ट्रांसफर इज अ फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सो जहां जहां कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व होता है तो वहां इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग दैट सम सॉर्ट ऑफ डिस्प्यूट माइट अराइज, राइट? अब मैं आपसे एक चीज इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाला हूं कि इन टर्म्स ऑफ डिस्प्यूट्स, why we consider the fact that this particular policy document that we get while purchasing or while issuing to the client is not a general private contract. ये एक जनरल प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं होता? ये इसलिए नहीं होता बिकॉज वन ऑफ द एंटिटीज कॉल्ड एज इंश्योरर,
the insurance company might be the private entity in terms of running a company, but is heavily regulated by IRDAI, Insurance Regulatory Development Authority of India. सो यहाँ पे दोनों पार्टीज का पर्सनल इंटरेस्ट कुछ कमर्शियल एंगल पे तो हो सकता है, दैट दिस सॉर्ट ऑफ प्रीमियम हैज टू बी पेड बाय द इंश्योर्ड, दैट इज द पॉलिसी होल्डर, एंड दिस सॉर्ट ऑफ claim has to be borne by the company itself if something happens or some damages happens in this condition. But उसके अलावा there are few regulations, certain outlines that are being decided by the regulatory authority called IRDAI. So that's why मैंने आपको बोला कि ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट पार्टी कॉन्ट्रैक्ट की तरह काम नहीं करता, कि यहाँ पे हम आपस में दोनों पार्टीज डिसाइड करके एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं कर सकती. There are certain regulations, there are certain outlines that has to be followed, and IRDA ensures that those guidelines, those regulations are being favored for the insurance companies and for the policy holders together, right? Now moving forward toward this insurance disputes part, so adding to this 500 plus million active insurance policies. Now there are three trigger points that leads to disputes. अब ये थ्री ट्रिगर पॉइंट्स कौन से हैं? पहला है wrongful repudiation. wrongful repudiation. अभी हम समझते हैं repudiation का मतलब भी क्या होता है. So basically in this particular trigger point, the idea of explaining is that the company sometimes claims that the policy holder lied or shield something behind to gain the benefit out of this particular policy. So just taking into this consideration, the company rejects the claim. तो यहां पे एक डिस्प्यूट अराइज हो गई. अब फॉर सपोज एक्स एंड वाई आर द टू पार्टीज एंड एक्स वाज द पॉलिसी होल्डर अबाउट टू बी. सो एक्स को ये खतरा था दैट आई एम एंटिसिपेटिंग दैट आई माइट गेट कैंसर डाउन द लाइन. सो ड्यू टू दिस anticipating health condition, he took the health insurance and he moved to the insurance company. So they both sat down, they decided to enter into a contract while the X decided to buy the particular policy. But X somewhere, X ने ये चीज छुपाई that he was diagnosed with the early stage symptoms of cancer. और उसने ये बात छुपाई कंपनी से. बट कंपनी को तो पता ही नहीं, बिकॉज कंपनी डिडंट कैरी फॉरवर्ड एनी पर्टिकुलर हेल्थ चेकअप बिफोर. सो somewhere X was predicting or anticipating कि this particular event has to happen down the line. So I might get a profit out of it. So this particular thing happened, and company came to know about this later on, that he was diagnosed already with this particular condition in the early stage itself, but still he didn't told us. He lied. So we are in the stage to reject this particular claim. Got it? So now we understand the second trigger point, technical rejections.
सो या, अब टेक्निकल रिजेक्शंस में क्या होता है? सो बेसिकली देयर इज अ पर्सन पी, he parked his car in the parking of a mall in Delhi and went into the shopping mall. And after he came back, he saw that his car is not there. So 10-15 minute he went here and there. He asked about his car, but someone told कि हमें नहीं पता. So it's better you go to the police station itself. So he went to the police station. He registered the complaint and काफी परेशान हुआ वो. And 3-4 घंटे बाद he came to know that your vehicle has been theft. So you might register the FIR. So he registered the FIR, and since you guys know काफी परेशान होता है उस टाइम पे कोई भी ह्यूमन बीइंग जब ऐसा कोई होता है कुछ होता है, तो उसको टाइम लगा ये चीज कम्युनिकेट करने के लिए टू द इंश्योरेंस कंपनी दैट माई पर्टिकुलर व्हीकल फॉर विच आई took the policy regarding the theft insurance, so has been theft. So अब आगे मुझे कैसे बढ़ना है इस पे? So company said that you have surpassed the technical period within which you have to come to us, और उसके बाद ही ये चीज लीगली लाइक यू कैन क्लेम दी अमाउंट और दी सम द कॉम्पनसेशन. बट अब तो वो टाइम जा चुका है. सो इस केस में भी डिस्प्यूट अराइज होती है दैट व्हाट इज द करेक्ट टाइम पीरियड in which the policy holder has to reach to the appellate authority or the insurance company or to the third party administrators to file the application of claim, right? Now the third point is very important, since all of us are from the legal background, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है समझना. एक्सप्लॉइटेशन of the ambiguous clauses. Now, what happens is, see, I'll be very honest, the insurance companies are the big giants, right? They have good amount of money. They are money backed, also investors backed, have good amount of money for marketing as well, have good amount of money for keeping a good legal team as well. So they prefer to keep their interest first while drafting the clauses, so that they should be in a better picture to defend themselves in terms of any dispute arises. And for that matter, companies might sell their products at the time of selling it to the policy holder. बड़ा अच्छा अच्छा बोल के their agents come and they try to sell their policies कि आपको ये benefit हो सकता है, you can get this particular claim after these many years. This is the benefit of taking this particular coverage. But at the time of taking the claim, there are too many factors that considered, and sometimes they fall into the consideration of rejection. तो ऐसा क्यों होता है? Now is the case that the clauses that are being added by the companies, the word by word clauses, वो इस तरह से add होते हैं to create the ambiguity. And जैसे ही ambiguity arise होती है, so the insurance company claims that this particular clause is not the exclusive clause, it's the secondary clause. So hence we reject the claim. If, for suppose, I gave you the example of a person who is anticipating to a particular disease called cancer. So, if at all, that particular person might have gone through the medical checkup before opting for the policy and given that report to the insurance policy. तो उस केस में इंश्योरेंस पॉलिसी डेफिनेटली वुडंट हैव गिवन दैट क्लेम टू हिम कि दैट मच क्लेम. वो और अच्छा प्रीमियम चार्ज करते और जो मेन कॉम्पनसेशन अमाउंट था उसको कम कर देते, सिंस यहाँ रिस्क ज्यादा है. बिकॉज of course the insurance company would try to save their money. Why would they serve at the social cost to each and everybody who is paying out the premium? सबको तो वो नहीं दे सकते of course.
So they'll try to save the money as much as they can. So the terminology of exploitation of the ambiguous clauses means they draft those clauses in the interest of their company so that their company is having the upper hand. Wait a minute. Yeah. Their company is having the upper hand if any dispute arises. Right? Am I clear? यहां तक सारी चीजें आपको समझ आ रही हैं कैसे हम चल रहे हैं आगे क्या क्या हम समझ रहे हैं. So yeah, now we'll understand the importance of IRDAI, Insurance Regulatory Development Authority of India. Right? It was established under Insurance Act 1938. ठीक है. Also, it draws its power from IRDA Act 1999. अब basically it's an autonomous body. ठीक है. It's an autonomous body. It looks after all the operations, all the rules and regulations that are to be being outlined for the insurance companies as well as for the policyholders. Also, it looks after the disputes as well. अब यहाँ पे किस फॉर्म में आईआरडीआई ऐसे एक्शंस लेता है जिससे वो अकाउंटेबल होल्ड कर पाए इंश्योरेंस कंपनीज को. व्हाट आर दोज ग्राउंड्स? बेसिकली दोज ग्राउंड्स आर issuing the circulars, issuing guidelines, making out recommendations. Similarly, in 2024, the IRDAI issued few of the guidelines and recommendations for the cashless system. जो cashless system होता है हमारे health insurance में. तो in 2024, the IRDAI took the major step. So we'll study कि वो क्या step होने वाला है आगे. So basically, we have to understand that all these rules and regulations, these guidelines, these circulars are not just mere the circulars or guidelines. These are the legislative regulations. Since this is the executive body of the government and it is autonomous in nature, so each and every step of it has weightage and power and equal to the statutory laws. कोई भी ऐसी regulations, directions issue होती है IRDA के पास, तो it has the power of a statutory law, right? So that's why we considered the fact that this particular policy contract is not mere another private contract that we hear or that we practice, right? So it has the power of a regulatory document since it is backed by the IRDAI. So yeah, moving forward, yeah. So since I told you that we have to read this policy document as a regulatory document. So ऐसा क्यों है? So the case is, since I told you all of the clauses that are being drafted in that document or the rules and regulations that are being drafted,
are in the interest of both the policyholder and the insurance company. So the thing is that insurance company itself cannot draft all the clauses out of the commercial interest. इंश्योरेंस कंपनी अगर आपसे प्रीमियम चार्ज कर रही है and in return they are providing you the compensation, so it is not having the sole authority to draft all the clauses, terms and conditions as per their interest. तो इसको अकाउंटेबल होल्ड कौन करता है? इसको अकाउंटेबल होल्ड करता है IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. So that's why this particular policy document is important to be considered as the regulatory document, right? Now we understand the important part of this particular session, the principles of insurance law. The principles of insurance law. The first principle is utmost good faith. अब ये प्रिंसिपल इस बारे में बात करता है that both the parties consider that each of them is declaring all the material facts regarding the policy document. Also, both the parties are not hiding anything. Also, both the parties are having a good interest regarding each other. Means आप आपकी इंटेंशन नहीं है, ना ही आपकी इंटेंशन है कि हम कोई चीज छुपा के एक दूसरे से पैसा लेंगे. Neither you are having the intention to cheat, right? So all these things are being considered in the utmost good faith principle of insurance law. That if two people are sitting together and deciding to come into a contract where one person is buying a policy and the other person is guaranteeing. One second. So yeah, there is some sort of issue in the screen itself. So yeah, one second. So yes, I was talking about the principle of utmost good faith. So we have understand that it mandates the honesty from both the parties, that both the parties are true to each other and they are not hiding any material facts regarding the policy document, right? The second important principle is the insurable interest, that the person who is opting for the insurance policy must be having the direct connect for the financial loss or the damage. अब ऐसा नहीं हो सकता that I am taking this particular insurance in the name of my friend for the financial damage that might occur to my friend in future. So for that case, my friend has to take the policy, right? Of course, for the bloodline itself, people opt for life insurance, health insurance, but you cannot directly opt for any general insurance in terms of fire, theft, or motor vehicle. If anything has to be anticipated, it must be for you, not for the other person. So the insurable interest, the principle of insurable interest talks about that the policy holder must be having the direct contact or the direct touch for the financial loss or damage that is being anticipated to be occur in future, right? So the other third principle is indemnity. So the principle of indemnity states if a car is moving on the road
and unfortunately it meets with an accident. So हम कंसिडर करते हैं द कार नेम इज स्विफ्ट, सुजुकी, मारुति सुजुकी स्विफ्ट, एंड अ ट्रक केम एंड इट हिट द कार फ्रॉम द बैक, एंड कार को अच्छा खासा नुकसान हुआ. द हेडलाइट्स, द टेल लाइट्स गॉट डिसमेंटल्ड, गॉट डैमेज्ड, एंड अच्छा खासा इसका बॉडीली इंजरी हुई, कार को बॉडी डैमेज हुई. एंड द इंश्योर्ड हु इज द पॉलिसी होल्डर, द ड्राइवर ऑफ द कार, took the insurance for the body damage. If anything, if any accident occurs, so जो भी डैमेज होगा वो मेरी बॉडीली डैमेज का मुझे कवर मिलेगा. ठीक है. अब आफ्टर दैट पर्सन रीचेज आउट टू द थर्ड पार्टी or to the insurance company, the third party agent administrator arrives, he surveys the site, he surveys the damage, then he prepares the report. And accordingly, he prepares a report that since you are having the cover for the body of the car, the outer body of the car, so we'll calculate the damage itself. But here the person tries to be smart and says कि यहाँ पे ऑलरेडी मेरा स्टेरियो खराब हो रखा था, तो मैं ये भी ऐड करवा देता हूँ कि मुझे ये भी ठीक कराना है. So in this case, the company will not pay you the claim for that. It will only pay the claim for the actual damage of the incident. So this particular thing is called as indemnity. Means the company's responsibility is to bring back the normal situation before the loss or damage. ऐसा नहीं हो सकता कि मारुति सुजुकी की कोई कार है, उसके साथ कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ, द फाइनेंशियल लॉस अकर्ड, द डैमेज अकर्ड, एंड क्लेम इस तरह से आया कंपनी से दैट वो सुजुकी की गाड़ी बीएमडब्ल्यू की हो गई है. इट कैनॉट बी द केस. So the company's job is to bring back bring back that normalcy that was there before the occurrence of damage or financial loss. जिस कंडीशन में गाड़ी पहले थी उसी कंडीशन में वापस वो कर देंगे. राइट. सो द फोर्थ प्रिंसिपल इज proximate cause. What is the proximate cause? This is very important in terms of courts. कोर्ट्स के पास जब जब केसेस जाते हैं इंश्योरेंस के, तो दे कंसिडर द फैक्ट कि सबसे इंपॉर्टेंट कॉज कौन सा है यहाँ पे. व्हाट वर द फैक्टर्स ऑफ कॉज, व्हाई इट हैपेंड, व्हाट इज द रीजनिंग, इफ फायर अकर्ड, व्हाई इट अकर्ड, व्हाट वाज द रीजन. So they identify and figure it out that whether this particular cause is the exclusive cause. I'm talking about cause, not clause. ठीक है ना, कि ये जो कॉज था, जो वजह थी ये होने की, ये मेन वजह थी या ये सेकेंडरी वजह थी. राइट. क्योंकि कंपनीज ट्राई टू पुट सर्टेन एक्सक्लूसिव कॉजेज टू पुट देम अंडर द सेकेंडरी कॉजेज सो दैट दे आर इन द पोजीशन टू रिजेक्ट द क्लेम, कि हमें क्लेम नहीं देना पड़ेगा सिंस दिस पर्टिकुलर कॉज इज द सेकेंडरी कॉज, ये मेन कॉज ही नहीं है, तो इस वजह से हम रिजेक्ट करते हैं क्लेम. राइट. अब हम आते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्रोगेशन. Subrogation is also the principle of the insurance laws. Basically, is the mechanism, since all of us are understanding what actually insurance is. हमने समझा था कि risk transferring mechanism is known as insurance. As simple as that, right? तो subrogation principle वहीं से govern होता है. When the insurance company enters into the shoes of the policy holder to cover their damages and financial loss. This particular mechanism is known as subrogation. कि अब से तुम मुझे इतना अमाउंट का प्रीमियम पे करोगे एंड आई विल बियर द सर्टेन अमाउंट ऑफ damages or financial loss for you that are being considered and decided by us mutually and under the rule book of law. So this particular principle governs that one particular entity enters into the shoes of other entity for the protection to cover their damages, right? And the last one is contribution. अब listen, आपको पता है ये इंडिया में लोग काफी ज्यादा आगे हैं, बहुत स्मार्ट भी है और उससे ज्यादा लोग ओवर स्मार्ट हैं. तो ऐसा कई बार देखा गया है, व्हाट पीपल डू इज दे टेक मल्टीपल
insurances for the one particular anticipated damage. If I am anticipating that my particular factory might catch a fire, so I am taking four insurances over it. 10 लाख की एक इंश्योरेंस है, मैंने चार इंश्योरेंस ली, कितने की हो गई? 40 लाख की. तो नाउ आई एम पेइंग दी प्रीमियम फॉर फोर इंश्योरेंस. बट जैसे ही फायर लगती है, आग लगती है मेरी फैक्ट्री में, सो आई कांट क्लेम दैट आई विल बी गेटिंग 40 lakhs, राइट? Those four companies will collectively give me 10 lakh. This is what the principle of contribution says. Are you getting? If particular person is taking multiple insurances for the same damage that might occur in future under the same material facts, so he or she cannot claim the multiple claims from those insurance companies. All of those will collectively provide you the one sum. अगर आपने 10 लाख की इंश्योरेंस ली है, 10 लाख का आपने मटेरियल फैक्ट्स डिस्क्लोज करके आपकी वैल्यू लगी है क्लेम की 10 lakhs, तो ऑल दोस फोर विल प्रोवाइड यू द 10 lakhs collectively. This is what the principle of contribution says, right? Now we'll understand the regulatory hierarchy in India. सबसे पहले हमें समझना है, since we know that this particular topic, this particular subject matter is being governed by the Insurance Act 1938 and the IRDA Act 1999. एंड इन दोनों एक्ट से पावर ड्रॉ करता है IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, विच इज एन ऑटोनॉमस बॉडी, द रेगुलेटरी बॉडी फॉर इंश्योरेंस डिस्प्यूट्स. ठीक है. अब हमें ये समझना है दैट व्हाट आर द मैंडेटरी स्टेप्स, द रेमेडीज और द लीगल रेमेडीज दैट आर अवेलेबल एंड दैट हैज टू बी डन जब जब कोई डिस्प्यूट अराइज होती है. सो इट इज मैंडेटरी टू गो फॉर द इंटरनल गेटवे. And what is the internal gateway? All these things are being provided in the PPT itself. So जब आप PPT पढ़ोगे, आपको ये सारी चीजें easily read out करके समझ आ जाएंगी. So you just have to listen it. समझना है आपको what I am saying. So the internal gateway is the GRO in the insurance company, the grievance redressal officer. So this is the first step. You can't skip it. If anything from the end of insurance company or from the end of policyholder occurs in terms of dispute, the first step is to reach out to the GRO, the grievance redressal officer. Post that, there are external adjudication authorities. As we know, there are consumer forums. As we know, there are civil courts. We know there are MACT tribunals, right? जहां पे मोटर व्हीकल के केसेस जाते हैं, क्लेम्स के. So these are the external adjudicating places where we can reach out. But the first mandatory step is to reach out to the GRO, the grievance redressal officer of the insurance company, because he is having the right, he is having the legal authority to either resolve the issue before going forward. आपको आगे जाने से पहले ही वो वहां पे रिजॉल्व कर सकते हैं अगर उनको लगता है देयर इज सम पार्ट ऑफ मिस्टेक फ्रॉम द एंड ऑफ इंश्योरेंस कंपनी इटसेल्फ. सो दे विल फिगर इट आउट एंड रिजॉल्व इट देयर ओनली. कई बार क्या होता है ना, लोग आर सो मच एग्रेसिव और दे आर सो मच लाइक एक्साइटेड टुवर्ड्स गोइंग टुवर्ड्स द कोर्ट्स, सो दे मिस द बेसिक स्टेप्स आल्सो दैट हम जा सकते थे, हम बात कर सकते थे, लाइक वी वुड हैव सैट डाउन एंड डिस्कस्ड कि हम कैसे क्या कर सकते हैं कि ये मिस्टेक्स हुई हैं अगर पॉलिसी डॉक्यूमेंट में. तो दीज आर द थिंग्स विच कैन बी मैनेज्ड, राइट? सो अब हम बात करते हैं क्लेम मैकेनिज्म्स की. ठीक है. क्लेम मैकेनिज्म जिसके ऊपर ये वर्कशॉप हमने बात करी है, इंश्योरेंस क्लेम्स के ऊपर. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लेम्स मैकेनिज्म. द फर्स्ट वन इज कैशलेस सिस्टम and the second one is reimbursement system. The first one is cashless, second one is reimbursement. A cashless system is a mechanism where the insurance company provides the claims to their network hospitals.
जो जो हॉस्पिटल्स का टाई अप है इंश्योरेंस कंपनीज के साथ, तो वो उन्हीं के पेशेंट्स को डायरेक्टली कैशलेस फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। एंड रीइंबर्समेंट में क्या होता है, व्हेन द पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी डिनाइज द क्लेम और द कैशलेस फैसिलिटी, so the particular policy holder initially has to pay all the bills, all the dues from his pocket, and then he can apply for the claim to get the reimbursement. So these two are the claim mechanisms. अब इसमें हमें ये बहुत जानना जरूरी है that in 2024 IRDAI brought a major guideline in cashless system. अथॉरिटी ने ये बोला कि ये पर्टिकुलर मैकेनिज्म बहुत ही गलत है कि सिर्फ नेटवर्क हॉस्पिटल्स पे ही कैशलेस फैसिलिटी प्रोवाइड होगी। अगर कोई भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपसे पॉलिसी ली है, तो इट्स योर ड्यूटी, योर अकाउंटेबिलिटी टू प्रोवाइड देम दिस पर्टिकुलर मैकेनिज्म, सिंस इट शुड बी इक्वल फॉर ऑल। यहाँ इक्वालिटी होनी चाहिए। और ऐसा क्यों हो कि दिस पर्टिकुलर हॉस्पिटल इज ओनली गेटिंग द एक्सक्लूसिव राइट्स फॉर दोज पेशेंट्स? ऐसा क्यों हो? लाइक पॉलिसी is a common phenomena in the market, in the society. So why should few people take the advantage out of it, right? So this particular thing happened in 2024, and it's backed by the executive legislations as well as statutory laws. So from now on, the government has also mandated to the insurance companies that you must ensure that even the non-network hospitals also provide the cashless facility टू देयर पॉलिसी होल्डर्स। ठीक है, अगर किस पर्टिकुलर कंपनी का टाई अप नहीं है किसी हॉस्पिटल के साथ, बट स्टिल इट्स देयर जॉब दैट द एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ ऑफ द हॉस्पिटल एंड द कंपनी स्टाफ शुड कॉन्टैक्ट एंड कोऑर्डिनेट अबाउट द क्लेम्स प्रोसेस, राइट? नाउ is the topic of TPA ecosystem. What is TPA ecosystem? Third party administrators or agents. अब जैसे मैंने आपको बताया कि जब जब कोई भी ऐसा इवेंट अकर होता है जहां पे डैमेज या फाइनेंशियल लॉस हुआ है, तो इंश्योरेंस कंपनीज आर नॉट दैट मच पेनेट्रेटेड इनटू दी सोसाइटीज दैट दे हैव सो मेनी नंबर ऑफ स्टाफ, जहां पे वो डेली बेसिस पे कोई ना कोई इवेंट में सर्वे करने के लिए या रिपोर्ट बनाने के लिए भेजें। तो दे हायर थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स हु एक्ट्स एज एन एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी के पास जैसे ही मेल जाता है या कॉल आता है कि ऐसे ऐसे हमारे साथ हो गया एंड you need to send somebody to make a report and give us the claim. So then the insurance company contacts the third party administrator. He reaches the site or the place where the event occurred. He reviews it, scrutinizes it, surveys the whole area, the damages, the financial loss that occurred, do the maths out of it, and then create a report. And then that particular report is being submitted to the insurance company. Company reviews it, studies it, and then decides whether to give the claim or not. So this is the particular process that happens on the behalf of third party administrators. अब यहाँ पे हमें समझना है कि थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर के पास क्या एक्सक्लूसिव पावर होती है, बिकॉज सिंस वी नो दैट people at this stage can manipulate anything if they have power in their hand, if they have power to survey, if they have power to prepare the report, so they might can manipulate. So in this case, the insurance company is liable for each and every action of the third party administrator. थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर अगर कोई गलती करता है या इवन अपफ्रंट क्लेम को लेके कोई भी कमिटमेंट देता है कि या तो ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका वो राइट ही नहीं है। द टीपीएस डोंट हैव एनी एक्सक्लूसिव राइट टू डिसाइड वेदर द पार्टी विल गेट द क्लेम और नॉट। देयर जॉब इज टू जस्ट प्रिपेयर द रिपोर्ट, टू गो आउट फॉर द सर्वे, टू रिव्यू द साइट। ठीक है? तो द कंपनी इज लायबल एंड अकाउंटेबल फॉर any of the actions of the TPA. Also, from the other side, TPA cannot act as the whole company itself. TPA is acting just
just as an agent for a particular task. ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब एक तरफ आप सोचोगे कि वो तो कंपनी का ही एक एजेंट है, बट इन दैट सेंस द टीपीएस कैनॉट एक्ट एज द कंप्लीट एंटिटी इटसेल्फ, राइट? उनका जो टास्क है, उनकी जो जॉब है, वो उसी के लिए ही काम कर सकते हैं. दे हैव नो एक्सक्लूसिव राइट टू साइन द पर्टिकुलर रिजेक्शन डॉक्यूमेंट और द सक्सेसफुल क्लेम डॉक्यूमेंट. देयर जॉब इज टू प्रिपेयर द रिपोर्ट एंड सबमिट टू द कंपनी. ठीक है. सो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द लैंडमार्क जजमेंट्स. कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स है दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, जहां पे हमें लाइक वील डिकोडिफाई द लीगैलिटी of the subject matter that we discussed in this particular lecture. The Mithu Lal Nayak versus Life Insurance Corporation of India. So basically, इस particular case में Supreme Court stated that after the statutory period expires, so now the statutory period is for 3 years. So the insurer cannot challenge a policy that the insured, that is the policy holder, hide something from the insurance company or they lied to them. भाई, आज आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, दोनों पार्टीज ने म्यूचुअली एग्री कर लिया कि ठीक है यार, मेरी ये कंडीशंस है, मुझे ये सही सही लग रहा है, मेरी ये कंडीशन है, मैं इतना प्रीमियम पे कर सकता हूँ. ठीक है. बट आपको 3 साल के बाद याद आ रहा है कि ये पर्टिकुलर चीजें तो कहीं ना कहीं फैब्रिकेटेड है, दीज आर फॉल्स और फैब्रिकेटेड एंड दी पॉलिसी होल्डर लाइड टू अस. सो दैट पर्टिकुलर पीरियड एक्सपायर्ड, दैट स्टैट्यूटरी पीरियड एक्सपायर्ड. So now the accurate period, I guess, is 3 years post 2015 की अमेंडमेंट के बाद. नाउ दी स्टैट्यूटरी लिमिट इज 3 years. तो हम उसी को कंसिडर करते हैं कि अगर आपको 3 साल के बाद याद आ रहा है कंपनी को कि पॉलिसी होल्डर ने तो झूठ बोला है, तो दे कैनॉट चैलेंज फॉर द रिजेक्शन ऑफ अ क्लेम, राइट? कि अब हम क्लेम नहीं देंगे इस पे, क्योंकि ऑलरेडी ये चीज झूठ है और हमें आज पता लगी है. So Supreme Court clarified in this particular case. You can note down also. You'll find it in the PPT itself. Mithulal Nayak versus Life Insurance Corporation of India. Right. The other one is Saurashtra Chemicals Limited versus National Insurance Company Limited. So the case is Saurashtra Chemicals Limited versus National Insurance Company Limited, 2019. So the Supreme Court stated that the insurance company in the stage of litigation cannot bring new facts out of the damages over which the arguments are being taken on. अब आज हमारा इस पर्टिकुलर फैक्ट्स के ऊपर आर्ग्यूमेंट्स चल रही हैं. फॉर सपोज हम बोलते हैं कि क्लॉज 1 गलत है, इस पर्टिकुलर क्लॉज 1 में काफी ज्यादा सेल्फ इंटरेस्ट की बात करी गई है, बट ड्यूरिंग दैट लिटिगेशन प्रोसेस द इंश्योरेंस कंपनी कम्स विद अनदर फैक्ट कि अच्छा, इसमें तो ये भी है. सो जस्ट टू रिजेक्ट द क्लेम द इंश्योरेंस कंपनी कांट जस्ट बीट अराउंड द बुश कि ये नहीं तो अच्छा, यहां से ढूंढ लेते हैं लीगल पॉइंट, अच्छा यहां नहीं तो हम यहां से ढूंढ लेते हैं. सो इन दिस पर्टिकुलर केस सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइड दैट just for the purpose of rejecting the claims, the insurance company cannot just bring the new facts or new nuances or the lacunae during the process of litigation. ठीक है. So yeah, this is the overall flow of the session that we took today. And of course, I am sure that you guys have understand the basics of the subject matter of insurance laws, how it is governed, because this particular topic is more about the regulations rather than just its litigation. Of course, we will come up with the part 2 of it, where we'll talk about the legal practical aspect of insurance litigation, how it works on the other side. But it was very important for all of you guys to understand the subject matter itself at the first stage. हम क्या करते हैं, being the legal professionals or the law students itself, हम सिर्फ लॉ को ही पढ़ना चाहते हैं.
Like we ignore the fact that किसी भी subject या topic के बारे में जानना बहुत जरूरी है. After that only like we can consider कि what are the legal outlines of it. And it's easy for us, right? हम already legal frameworks को जानते हैं, तो it's easy for us to identify and clarify on the legal nuances. But it's important to understand the subject matter outline. So yeah, also guys, be prepared because LAWversity is about to launch the mentorship program itself for the different verticals of litigation, whereby we'll be dividing the topics like criminal litigation, corporate litigation, civil litigation, and we'll be training our learners for a stipulated time. And that learning would be effective training plus live sessions plus live drafting skills, giving the assignments to our learners, and those assignments will get evaluated by our expert staff. Also, they'll be getting in touch with their personalized mentors, and that particular mentorship would be fruitful because we will be ensuring that that particular mentorship is landing you towards a good job. We'll launch this particular mentorship to make you job ready, not just to teach you theoretical aspects, not just to make you skill ready, but also to channelize you towards a good, decent job, good, decent internship, right? Channelizing you towards the better law firms so that you can upgrade your CVs, upgrade your career as well, right? So I guess it's good for now to conclude this particular session today. And we understood the flow of events that usually take place in an insurance dispute, from understanding the definitions of the insurance itself and taking you towards the different aspects of legalities, the authorities to whom, like, which particular parties can reach out. Also, the few important Supreme Court landmark judgments. So, yeah, thanks a lot, guys. It was very nice of you to stay in this particular session. And yeah, bye bye. Good night.